Now it's visible or not? Yes, sir, visible. Visible है ना? ठीक है. So लास्ट क्लास में हमने वेल्डेड जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, और इन ड्राइंग शीट पर जो है, जब वेल्ड जॉइंट को वेल्ड करना है तो जिस कंपोनेंट पे हमें शो करना है कि हम वेल्डिंग करना है, तो उसका कन्वेंशन, रिप्रेजेंटेशन, सिंबल और क्या क्या इंफॉर्मेशन हम उस सिंबल में इंसर्ट करते हैं, वो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. नाउ आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्डेड जॉइंट्स. So basically there are two types of welded joints. One is the lap joint and other is the butt joint. So let's first understand okay, what is the strength of butt welded joints. So here in this case, the length of leg or size of the weld is equal to the throat thickness, which is equal to the thickness of plates. So there is a term which is used here that is known as the throat thickness, and that throat thickness is the leg or the size of the weld. That is the length of leg or size of the weld. So here there is an example figure में देखें. So this is a butt welded joint है. ये प्लेट की width है और ये thickness of the plate है, और this is the butt joint. ये force P लग रहा है. So the tensile strength of the butt joint is given by, it is either for the single V or the square butt joint. So that is given as P is equal to T times L times sigma T, where sigma T is the tensile strength and L is the length of the weld. This is the length of the weld. कहाँ से लेके कहाँ तक आपको length weld करना है. So that is the length of the weld. And this length of the weld is generally equal to the width of the plate. जो प्लेट की width है उसके बराबर होगी. And T represent the thickness of weld plate. जो weld plate है जिसको weld करना है उसकी thickness है T. Or P is the tensile force on the plates, or sigma T is the tensile stress in the plates. So this is the single V or square butt joint. For double joint, such as कि डबल बी हो गया या डबल स्क्वायर हो गया या और कोई डबल बट जॉइंट है, तो द स्ट्रेंथ इज गिवन बाय T1 plus T2 into L. That is the thickness. This thickness is, this is T1, or this thickness is, this is T2. So T1 plus T2 into multiplied by this length L, and this is to be multiplied by the sigma T, the tensile strength of the material of the weld plate. So this is the strength of the butt welded joints. Now, strength of transverse fillet welded joints. So the transverse fillet welds are designed for tensile strength. So let us consider a single and a double transverse fillet weld. So as shown in the figure, this is single transverse fillet, and the second figure shows double transverse fillet. L is the width of the plate or the length of the weld. S is the thickness of the plate. So in order to determine the strength of the fillet joint, it is assumed that the section of the flat, is a right angled triangle ABC with hypotenuse AC. So this section is considered as a right angled triangle. This is the right angled triangle ABC with hypotenuse AC. So in this is hypotenuse. So this is the hypotenuse AC making equal angles with other two sides. So it is having two sides. This is the AB side and the BC side. So this hypotenuse is making equal angle with this AB and this BC side.
The length of each side is known as the leg or size of the weld. So this length AB and BC, this side AB and BC, these are known as the leg or the size of the weld, and that is we denote this by S. So, and the perpendicular distance of the hypotenuse from the intersection of the legs, that is BD. So this perpendicular distance यहाँ से लेके यहाँ तक ये hypotenuse है. So ये B से hypotenuse को यदि हम perpendicular distance measure करें, so this distance is known as the throat thickness. इसको हम कहते हैं throat thickness T. So the minimum area of the weld is obtained at the throat BD, which is given. So why we consider this? Here there is a minimum area, and this minimum area is there, so there will be maximum stress will work here. So this is the highest point of highest loading area. So that's why we consider this throat thickness. So the area is given by the product of the throat thickness into the length of the weld. So let P is the throat thickness, S is the leg or the size of the weld, and P is the thickness of the plate. So L is the length of the weld. Throat thickness P. So this throat thickness yes, here. So throat thickness is equal to S times that is size of the weld into sine 45 degree. So this distance is equal to this distance multiplied by sine of 45 degree. So it is given as 0.707 times S. That is the throat thickness. Therefore, minimum area of the weld or the throat area, that is maximum stress place is there. That is equal to throat thickness into length of the weld. So if T is the throat thickness, L is length of the weld, so it is given as 0.707 S into L. Now, if sigma T is the allowable tensile stress for the weld metal, then the tensile strength of the joint for a single fillet weld. So this is a single fillet weld. So its strength is given by E. So that is equal to throat area into allowable tensile stress. So the throat area is 0.707 S into L into sigma T. So this is the case of a single fillet. And tensile strength of the joint for a double fillet. So डबल फ्लैट की एक ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है फ्लैट जॉइंट. सो उस केस में क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी द 2 into 0.707 S into L into sigma T, or P is equal to 1.414 S into L into sigma T. So this is the relation. This is the relation of tensile strength of double fillet weld. This is transverse fillet. ये transverse fillet कर रहा हूँ. Transverse fillet means जो weld हम कर रहे हैं, that welding we are doing is perpendicular to the applied perpendicular to the direction of the applied force. ये देखो इस direction में हम weld कर रहे हैं. So this is the transverse fillet. और यदि हम welding इस direction में करें, इस direction में, जिस direction में force लग रहा है, ऐसे, तो इसको बोलते हैं parallel fillet. So yeah. The parallel fillet welded joints are designed for the shear strength. So they are designed for the shear strength. So consider a double parallel fillet welded joints. So this is the figure shows here double parallel fillet weld. ये fillet यहाँ पर है और एक fillet यहाँ पर है. So parallel, and that is a parallel means the it is acting in the जो force की direction है उसके parallel में welding कर रहे हैं. So minimum area of weld or the throat area is A is equal to 0.707 S into L हो गया. If the tau is the allowable shear stress for the weld metal, then the shear strength of the joint for the single parallel fillet weld
सिंगल के केस में क्या होगा, थ्रोट एरिया इनटू अलाउबल शियर स्ट्रेस, सो इट विल बी 707 s 0.707 s into L into tau। और डबल के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी 1.414 into s into L into tau। So this is the strength of parallel fillet weld, single or double parallel fillet। Then combination of this parallel and transverse fillet welded joints की strength क्या होगी? So if there is a combination of single transverse and double parallel fillet welds like this, ये इस तरह सेट कर रहे हैं कि वेल्डिंग यहाँ भी की है, यहाँ भी वेल्डिंग की है, सो दिस इज द पैरेलल केस, और यहाँ वेल्डिंग की है, सो दिस इज द ट्रांसवर्स फिलेट। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन अब यदि हमने वेल्डिंग इस तरह से किया है दो प्लेट्स को, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? सो दैट इज गिवन एज देन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इज गिवन बाय द सम ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड्स। तब उस केस में इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इन दोनों का समेशन हो जाएगा, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पैरेलल फिलेट वेल्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, दोनों का समेशन कर देंगे तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन की मिल जाएगी। सो मैथमेटिकली दिस वी कैन रिप्रेजेंट, सो दिस इज हियर द ट्रांसवर्स फिलेट और ये पैरेलल फिलेट, सो दोनों को ऐड किया हमने। ये जो ट्रांसवर्स है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐड करता है, और यहाँ पर जो है वो शियर स्ट्रेस ऐड करती है पैरेलल। So where L1 and L2 this represent, L1 is normally the width of the plate और L2 ये लेंथ है इसकी पैरेलल प्लेट की, कहां से लेकर कहां तक की हमने। So this is the strength of the butt weld and fillet weld। Now let's solve problem। एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, तो ये जो हमने पढ़ा है समझ में आ जाएगा कि क्या है। So the problem is that there is a plate 100 mm wide and 10 mm thick is to be welded to another plate by means of double parallel fillets। Parallel fillets, double parallel fillets। The plates are subjected to a static load of 80 kilonewton। So the load which is acting on the plate is 80 kilonewton। Find the length of the weld if the permissible shear stress in the weld does not exceed इतनी। So it's a simple problem, it's like this कि एक प्लेट ये है और दूसरी वाली जो प्लेट है वो ये है, और यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट वेल्ड किया ये। ठीक है, ये वाला केस है, और जो लोड एक्ट कर रहा है दैट इज द पी, यहाँ पर दैट इज पी, दैट पी इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। सो 80 किलो न्यूटन का लोड है, और जो इस प्लेट की थिकनेस है द थिकनेस ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 10 mm। So what we have to find out length of the weld, we have to find out length of the weld। ठीक है, this is the tau permissible 55 megapascal यानी 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, so the strength of double parallel plate is 1.41 into कितना था, let's check it here, here S into L2 into tau, so that is S into L2 means this length, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ ये into tau। So it's a very direct formula based problem
कैलकुलेट करिए आप लोग और बताइए. इट्स डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है. सो लेंथ ऑफ द वेल्ड इज निकालना. अभी तक तो निकल जाना चाहिए. बताओ भाई, निकाल के सॉल्व करो. 5 मिनट्स है आपके पास में. Sir, length 102.82 mm. लेट अदर्स भैया और भी बताएं. चेक कर, जस्ट क्रॉस चेक कर लो. कितने आई बताएं भैया. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है. एवरीथिंग इज गिवन, सिर्फ फार्मूला बेस्ड रखना है और निकालना है. पी हमें मालूम है. यस सर, वही आ रहा है. हाँ, ये 1.41 एस जो है ये प्लेट की थिकनेस के बराबर. एल हमें निकालना है. या दिया है 55 50,000 on 1.414 into 10 into 55 mm. Calculator. बताओ कितना आ रहा है. इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम है. 103. वेल्डिंग जॉइंट्स में मैं it's approximately I think 103 mm. So this length is 103 mm. याद ठीक है. So this is the length of the weld. It's a direct formula based problem. Now there are some special cases of this
fillet welded joints. So one example is circular fillet weld subjected to torsion. So this is the case. Okay, this is a rod which is welded to this plate. So the welding is done around this circular fillet welded joint. Circular fillet. So consider a circular rod that is subjected to torsion. Yeah? Torsion. So here a circular rod is connected to a rigid plate